In India, the largest brackish water lake is in the eastern coast in the state of Orissa. Chilika, the pear-shaped lake, is famous world over because of its enormous size and ecological importance. In fact, it is the biggest inland lake in the country. It has as many as 100 tiny islands, which are used as picnic spots. They further add to the ornamental beauty of the lake. It attracts tourists from all over the world who throng this lake throughout the year. All along its arched shape, Chilika is encircled by hills rich in varied forms of fauna and flora. Water spread of the lake is about 900 square kilometers in summer and approximately 1150 square kilometers during monsoons. As many as 10 streams and rivers bring fresh water to this lake. The northern part of the lake is fed by the tributaries of Mahanadi, River Daya being the main contributor. Another main contributor is River Bhargavi. These rivers and other small tributaries bring nearly 3 lakh cusics of fresh water to this lake. At the eastern end, Chilika is connected with the Bay of Bengal through a zigzag channel 35 kilometers long and about 360 meters wide. Its southern end also meets the sea through another channel 15 kilometers long called Balugaon Canal. These canals are the source of saline or seawater to the lake. The salinity of the lake is intermediary. That is, it's between the fresh and the seawater. Its salinity varies with the quantity and quality of water brought to it by the rivers, and also with the degree of mixing. At the southern end of the lake, that is, near the Balugaon Canal, the salinity of water goes up to 35 parts per thousand, whereas salinity decreases gradually as we proceed towards the northern end of the lake. Due to the inflow of flood water during monsoons, the entire lake becomes saline and gradually turns into brackish water. It attains its peak in July. Rivers always bring eroded soil particles called silt with the water, which eventually is flushed into the sea. But when the silt load is high, it starts settling at the bottom of the lake. Chilika receives about 13 million tons of silt per year. This quantity is quite high and is endangering the ecology of the lake, for the lake itself is quite shallow. Its maximum depth is only 3 meters. Sunlight penetrates into almost every part of the lake. So, all green plants, wherever they are in the lake, can perform photosynthesis and prepare their own food. This is one reason for the lake being highly productive. The lake inhabits a large number of microscopic plants and is luxurious in larger plants too. Potamogeton, Scypus, Halophila, Phragmites, Najas, Gracilaria, Anteromorpha, and many other species predominantly flourish in the waters of Chilika.
The productivity of the lake is evident from the average plankton mass that ranges between 0.03 to 0.27 milliliters per liter of water. The plankton growth shows two peaks, one during April to August, the other during October to November. During the first peak, phytoplankton dominates the lake, while the second peak is dominated by zooplankton. Diatoms, which are unicellular algae, are the chief element in phytoplanktons, while copepods are the dominating organisms among zooplanktons. Chilika serves as an important source of fish and prawns. Nearly 152 species of fish and 21 species of prawns are found in the lake. The annual yield of lake is about 3,500 tons. The chief catch being Mugil cephalus, Mugil magrolapsis, Polyninum, Hilsa, Lates, green and mestos. A large quantity of prawns and fish from this lake are exported, bringing valuable foreign exchange to India. The alga gracilaria is also harvested from the lake for preparation of agar. About 120 villages in and around Chilika, with the population of nearly 60,000 people, depend upon this lake for their livelihood. Chilika serves as a benign habitat for different types of birds, resident as well as migratory. Migratory birds come to Chilika Lake in early November and depart by the end of February. They take shelter in a small marshy island called Nalaban, which has been declared as one of the natural bird sanctuaries of India. It has small bushes and reeds that provide shelter and healthy breeding habitat for all birds. The Chilika Lake serves as a healthy breeding ground for certain varieties of sea fish that require an intermediary environment for breeding. Shrouded in mysticism, the lagoon of Chilika wakes up to mystical experiences every morning. The soft sunshine gives way to the flight of flamingos. Dolphins glide gracefully, cavorting now and then, creating splatters all over. Silhouetted against the dawn, the fishermen embark into the unknown to eke out a living. About 1 million migratory birds of nearly 225 species migrate to Chilika every year. Rare and endangered species like the Barracuda limbless skink are only found in Chilika, which also shelters the largest population of Irrawaddy dolphins. Nearly 2 lakh people depend on this lagoon for their livelihood. Chilika seems like a symphony composed by the breathing notations of life. Chilika, Asia's largest brackish water lagoon, lies in the east coast of India. Over the years, an embankment took place due to the tidal waves, giving rise to a massive sandbar, creating the lagoon. 1100 square kilometers during the monsoon, the lagoon shrinks to 900 square kilometers in summers. The lagoon water is fresh as rivers and rivulets pour into it. It is also brackish due to sea water which enters with the tide. The marine ecosystem, along with this unique confluence of fresh and marine water, supports a wide range of aquatic flora and fauna, making the lagoon a hotspot of biodiversity.
at India's largest saltwater lake, Chilika. Lakhs of migratory birds have homed in at Asia's largest inland saltwater lagoon, Chilika Lake in Bhubaneswar, due to the favourable brackish waters and improved ecosystem, which in turn has also lent a boost to tourism. With the arrival of more than 7 lakh species of migratory birds, a record-breaking figure will be achieved this year. पक्षी वर्ष अक्टोबर 17 तारिख पक्षी आसवा आरंभ होती बर्तमान सुधा 2,76,000 पक्षी आसमान जो आमर 234 भेराइटी चढ़ई ता भितर आम बर्तमान पाइलुण आम 100+ पाइलुण. The Forest Department is taking measures to step up security to protect these winged creatures against poachers. For protection of birds, we have taken stringent steps. We have set 16 camps around Chilika and 2 mobile squads, 1 control room at Tangi. We are conducting massive awareness campaign among the villagers around Chilika. As compared to last year, an additional 1,50,000 migratory birds arrived at Chilika. The species of migratory birds include the white-bellied sea eagles, grey-legged geese, purple moorhen, jacana, herons and flamingos, which flock to the nesting sanctuary here in the winter from December to January.
As winter sets in, birds from the northern hemisphere migrate to Chilika. The migratory birds are found all over the lagoon, but the popular feeding and roosting ground is around Nalabana. During summers, the island becomes the nesting colony of terns. This island of 15.5 square kilometer area has been notified as a wildlife sanctuary since 1987. The people of nearby villages were dreaded bird hunters at one time, but today they are protecting the winged visitors of Chilika. With the efforts of CDA, Chilika Wildlife Division, and local NGOs, there is complete transformation, and the villagers have been transformed from bird hunters to saviors of the birds. There are seasons and reasons for visiting this breathtaking lagoon, which is laced with many folklores. Apart from birds and dolphins, Chilika is surrounded by many historical temples. ओडिशा में चिलिका झील में देवी कालीजाई के दर्शनों के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ भक्तों की रक्षा करती है देवी। भक्ति, आस्था और विश्वास का संगम अनोखा होता है। आस्था हो तो पत्थर भी भगवान की तरह पूजे जाते हैं और विश्वास हो तो वही पत्थर जी उठते हैं। भक्ति, आस्था और विश्वास का ही अनोखा संगम है ओडिशा की कालीजाई देवी। देवी का मंदिर चिलिका झील के बीचों बीच बसा है और मंदिर तक जाने के लिए भक्तों को झील का सफर करना पड़ता है। मान्यता है कि देवी कालीजाई यहां दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों की रक्षा स्वयं करती हैं। चिलिका झील में देवी कालीजाई के दर्शनों के लिए आने वाले भक्त यहां आकर देवी का आशीर्वाद तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही प्रकृति के खूबसूरत नजारे भी आस्था की इस यात्रा को यादगार बना देते हैं। ओडिशा का मशहूर कालीजाई मंदिर समय के साथ विश्वास और आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। मशहूर चिलिका झील के बीचों बीच बना ये मंदिर आसपास के इलाकों के अलावा झील में घूमने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण बन गया है। झील में घूमने वाले लोग भी मानते हैं कि उनकी रक्षा मां कालीजाई करती हैं। चारों ओर लहराता पानी और सुबह की रोशनी में नहाए हुए इस छोटे से मंदिर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, कुछ पक्षी किलकारियां करते हुए निकल जाते हैं। चिलिका घूमने आए पर्यटक भी इस मंदिर की खूबसूरती की अनदेखी नहीं करते। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जाने तो कहानी 2 सदियों पुरानी है। बताया जाता है कि 200 साल पहले एक नाव में सवार होकर दूल्हा दुल्हन अपने परिजनों के साथ घर जा रहे थे। तभी अचानक तूफान आया और नाव उसमें फंसकर पानी में डूब गई। नाव में सवार सारे लोग तो बचकर किनारे तक पहुंच गए, लेकिन जाई का कोई पता नहीं चला। उसकी चीख उस झील में कहीं खो गई और उसने एक शक्ति का रूप ले लिया। ये किंवदंती है जो धीरे धीरे एक आस्था बन चुकी है। सदियों पहले चिलिका झील में गुम हुई मां कालीजाई आज एक देवी के स्थान पर है। बेशक कुछ लोगों के लिए ये पर्यटन की कड़ी है, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं के दिल में बसी मां कालीजाई उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रतीक है। लोगों का कहना है कि नाव में सवार उस लड़की की रूह आज भी उस झील में घूमती है और पर्यटकों, मछुआरों और श्रद्धालुओं की रक्षा करती है। बताया जाता है कि एक दिन यहाँ के राजा को सपने में जाई ने कहा कि पहाड़ी पर एक मंदिर बनवा दो जिससे वो वहाँ रह सके। और दूसरा बार इसको सपने में बोला है जब मेरा मंदिर बनाओ, मैं इधर आदिर्भाव हो गए। उसका बाद वो मंदिर आधा बनाया, आधा किया है, उसका बाद वो आदिर्भाव हो गया।
राजा ने वही किया और वहाँ एक प्रतिमा स्थापित करवा दी, जो धीरे धीरे माँ काली का अवतार माना गया और उसका नाम माँ कालीजाई बन गया। वो एक लड़की थी जिसकी मौत हाई टाइड में फंसकर हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो लोगों की रक्षा करती है जो इस झील में आते हैं। ensure safety of each and everybody who goes to Chilka, who calls her or who prays her. इस झील के मछुआरे माँ कालीजाई के मंदिर में माथा टेके बगैर मछली पकड़ने नहीं जाते और यहाँ दूर दूर से आने वाले आम लोग भी पहले कालीजाई के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कहीं और जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ फेंके सिक्के अगर माँ के स्थान पर टिक जाएं, तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। समूह देखना है कैसे ना एक कॉइन धरेंगे, कॉइन के ऐसे मारेंगे, ऐसे मारने से वो चिपके जाएंगे। इसका वो जो माँ है ना, माँ का बदन में चिपके जाएंगे, जाने तो मनोकामना पूर्ण हो गया। माँ के मंदिर में 4 देवियां विराजमान हैं, माँ गंगा, अज्ञान देवी, माँ दुर्गा और कालीजाई। इन 3 देवियों के बीच विराजमान माँ कालीजाई के दर्शन करने के लिए रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटन उद्योग भी काफी फल फूल रहा है। करीब 10 से 15 हजार लोग हर साल 1 दिसंबर से 1 फरवरी के बीच यहाँ आते हैं और हर छुट्टी पर भी यहाँ खासी भीड़ होती है। कालीजाई मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ कभी किसी प्राणी की बलि नहीं दी जाती, बल्कि मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ कोई न कोई पशु जरूर छोड़ जाते हैं और वे यहाँ आजादी से घूमते हैं। ये माँ का ऊपर जो विश्वास है, मातृशक्ति का ऊपर जो विश्वास है, इसको मन में फिर पुनः उजागर करने के लिए मैं दर्शन करने लिए आया हूँ। क्योंकि नारी के लिए वो सबसे अच्छी माता है और माता का दर्शन सबको अच्छा लगता है भाव से, और सब जन आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ घूम रहा एक मोर भी अक्सर श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए आ जाता है। मंदिर के आसपास पानी से निकले झंडे यही बताते हैं कि कितने लोग मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ आते हैं और झंडा गाड़ जाते हैं। सूरज ढलने के बाद इस मंदिर का आसपास इलाके में अजीब सी खामोशी छा जाती है। कहते रात के अंधेरे में माँ किसी न किसी रूप से बाहर निकलकर यहाँ रह रहे जीव जंतुओं की सेवा करती है। शायद यही वजह है शक्ति स्थल होने के बावजूद भी इस मंदिर में आज तक भी बलि का प्रथा नहीं रहा।